This is bus beach. वो टाइम पे 13,000 से ऊपर लोग इधर आराम से आ सकते थे. Right now, right? That's the old town. So right now we're leaving for the Sandland and we've booked our taxi. Come along with us. चल. Hey, गाड़ी start कर. So this is the property view. The garden view rooms. Sculpture. 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी ने 250 रुपीज लिए. इंडिया में होते तो अपन इंडिया में नहीं है ना. बट एक्चुअली टैक्सीज आर वेरी एक्सपेंसिव. या उसमें भी येलो टैक्सी, ब्लैक टैक्सी और कलर्स है ना. कलर ब्लू टैक्सी. कलर्स के अकॉर्डिंग टैक्सी का प्राइस बढ़ते जाता है. ट्री गर्ल्स. क्या बोला तूने? गिरीश is enter. No, I told you. Tree girls. Shit. Let's see if it is worth 1,200 rupees. The Astro Cafe. There, I think. We're at the Lara beach right now. तो बीच पे इतना अच्छा वाइब है. बहुत लोग इधर अंदर गार्डन के इधर बैठे हैं. उनका लंच कर रहे हैं. पूरा पिकनिक स्पॉट. बारबेक्यू चालू है. लाइक आई सी उनको प्रोविजन दिया गया है. लाइक एवरी टेबल हैज अ प्रोविजन फॉर बारबेक्यू. राइट. दे हैव गॉट देयर ओन टेबल्स. इट इज अ प्रॉपर पिकनिक स्पॉट. लाया है. बीच पे इतना अच्छा लोकेशंस रहते हैं जहाँ पे वाईफाई स्पॉट्स फ्री रहते हैं. सो यू कैन कनेक्ट टू द वाईफाई स्पॉट. और दिस इज़ बस बीच. हम पहले थे लारा बीच पे. उसके पहले हफलास बीच. एक ही सी शोर है लेकिन अलग अलग बीच के नाम दिए हुए हैं. देयर इज अ रेस्टोरेंट अराउंड द बीच फेसिंग व्यू. So now we are heading to the old bazaar. बेस्ट बाजार, ओल्ड बाजार. या यहाँ पे इतना ही था. सैंड बैंक एंड द बीच. दैट्स इट. नॉट सैंड बैंक. मालदीव्स की वजह से I'm saying sand bank in Sandland. So we are at the old bazaar right now. Right? That's the old town.
तो हम लोग अभी एक बहुत लोकल रेस्टोरेंट में आ गए हैं एंटालिया के, प्रॉपर सिटी सेंटर में है। तो इधर शॉर्मा मिलता है, हैमबर्गर मिलता है, कॉम्बोज है, पेप्सी, फ्रेंच फ्राइज और उनका आयरन करके एक योगर्ट ड्रिंक है तो वो भी मिलता है। सामने एक्चुअली डोमिनोज और बर्गर किंग भी है, लेकिन हमने वो ऑप्ट आउट किया क्योंकि वो इंडिया में भी खाते हैं, तो इधर थोड़ा लोकल खाए तो उनका टेस्ट और उनका जो एक्चुअली टर्किश फूड बहुत फेमस है, तो बहुत लोग बोलते हैं उसके बारे में। तो हम लोग अभी वो ट्राई कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग। How good it is. यस। So this is the shawarma wrap. This really looks very filling. Bak masa 6 boşalıyor, masa 5 boşalıyor. Masa 11 boşalıyor. Lovely. Good. So this was the place where we had our lunch. Bargain and get something good here, but I'm not seeing any street shops. It will come. It will come. It is a 1 kilometer big bazaar. Oh, nice. Fajita. There's tacos also. This is the old bazaar. So he's done with his shopping. We forgot to vlog as usual. Okay guys, we are done with the shopping. Hell lot of shopping here. If you can see, get cash because a lot of shops don't have card machines. So, and also in cash you can get good discounts as well. The next morning. East Anatolian region. Anatolia by the from the Greek language, it means the place which rises sun. In our language we call Anadolu. We reached the Pamukkale. My hands are freezing right now. चलो भाई. Tell bhai. Bhai is brother. Brother? Yeah. Bhai. 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 Bhai which means? Bhai. His brother. 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 Yeah, I know. Bhai, I know. That's the museum. Hierapolis Museum. Wow, this is nice. Where are we going now, Rohan? We are going to Hierapolis right now. So Hierapolis is from the Roman culture. It's right there. It is a walk of, I guess, just 5 minutes. So we are just done with the White Mountain, the famous White Mountain. People are paragliding there, if you can see. There are a lot of activities you can do here as well. Paragliding hai, helicopter ride hai. Definitely it's worth every penny you will be paying. Sandland जो हम कल गए थे, I wouldn't recommend that. I'll rather say कि आप वो online ही देख लो.
but this is worth every penny. मतलब from what we experience right now, the lake, Hierapolis, beautiful. Like imagine like everything has happened over here and we get to see everything. क्या क्या हुआ था, what is the ancient culture. We're going there right now. So overall the tour from which we have booked this was very nice. We have booked this for I guess 45 euros per person, and they gave us a discount of 5 euros, so we paid 85 for 2 people. And the tour is really nice. Like they just don't directly bring you here. आपको वो पहले वाइन टेस्टिंग कराएंगे, देन देर इज़ ओनिक्स फैक्ट्री जहाँ पे वो स्टोन्स वगैरह सब कुछ दिखाएंगे आपको. सो देर आर 2-3 प्लेसेस पहले जो मेंशन भी नहीं है, वो आपको वहाँ पे भी लेके जाएंगे, एंड देन दे ब्रिंग यू योर. सो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. आई मेंशन द लिंक जहाँ से हमने बुकिंग किया था इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन गो चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू डू द बुकिंग. इट इज़ सो प्रिटी. जस्ट लुक एट द व्यू. What is this, Rohan? हाँ? एंट्रेंस ऑफ हीरापोलिस. Oh wow. यहाँ पे लोग इधर एंट्री पे रुकते थे. कोई भी अगर किंग आ रहा है या कोई दुश्मन आ रहा है, ये दोनों बंकर्स में लोग सिपाही खड़े रहते थे जस्ट फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन. और ये मेन गेट है. यहाँ मेन गेट से ये एंट्रेंस है. Wow. सो बंकर में इफ यू कैन सी देयर आर गैप्स इन बिटवीन. पे लिखा हुआ भी है रोमन लैंग्वेज. In the bunkers, if you can see, there are gaps in the bunkers from where people used to. Ah, right. Aim. Right, these gaps. Okay. Entrance of the Roman city. Lovely. But ये जो pillars है, these pillars go to the end, but right now there's nothing. Like hardly a few pillars. Oh, it is there. It is still there. ये side का नहीं है. Lovely, very nice. Look at these carvings, beautiful. Wow. So this is the theater, and look at this view. We're at the top right now. So the theater, इसका जो ऊपर का एरिया है उसमें 10,000 लोग ऑक्यूपाई हो सकते हैं आराम से. और जो नीचे वाला पार्ट है, जो फेंस के नीचे वाला जो दिख रहा है, उसमें 3,000 लोग ऑक्यूपाई होते हैं. वाओ. यहाँ पे जब सब कुछ होता था वो टाइम पे 13,000 से ऊपर लोग इधर आराम से आ सकते थे. The next morning. I'm having my coffee and we are going to check out right now from our room क्योंकि हमें जाना है अभी इस्तांबुल एंड हमारी फ्लाइट है 2 बजे. अभी हम यहाँ से चेकआउट करेंगे. We'll head out to the airport. 1 ही घंटे का सफर है, so we'll reach early. I'll see you when we head out to the airport. But yeah, Antalya was amazing. I wish हम एक और दिन रुकते यहाँ पे because it's beautiful. Like 3 दिन यहाँ पे काफी नहीं है. Technically we were here only for 2 days because एक दिन तो हमारा traveling में ही चला गया था. But it is amazing. Like एक दिन आपका पामुक्कले में जाएगा. Then 2 days at least you should have to explore the entire city. Yeah, if you're planning to come to Antalya, do this for 3 days. And Cappadocia we couldn't do because हमारे पास time ही नहीं था. Like it's already been 22 days we are away from India, so we have to go back also right now. Turkey में we have just explored Istanbul and Antalya.